was unbelievable at Narendra Modi Stadium today. We all were like, I don't know, we've been never like sure about who's gonna win it. And at the last over, we saw Mohit Sharma's brilliance. We saw Ravindra Jadeja's villain. I was just telling this before the live match to Chirayu. It always takes an experience to win a final. It doesn't matter how big hitter you are. But if you are not experienced, it's a final match. You cannot really do it. I have Vijit and Chirayu with me. Chirayu have been celebrating Gujarat Titans win in every match with us. And this day, this was Gujarat Titans in the final. They played really good. Like in the first inning, they've had a really great numbers in on the scoreboard. But then afterwards, Chennai Super Kings, they have got it. They have chased down it. It is because of like डीएलएस की तरफ से भी थोड़ी मदद रही बट कई लोगों को लगता है ऑब्वियसली 5 ओवर्स में 171 का रन एक बड़ा टारगेट था बट देन दे चेस डाउन डेफिनेटली बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स लगे बट एंड में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट से मुकाबला जीता 5 ट्रॉफीज आ गई है चेन्नई सुपर किंग्स के नाम एंड आई फील लाइक अ टेली शॉपिंग एंकर राइट नाउ दिस मच आई एम शाउटिंग बट आई एम वेरी एक्साइटेड विद दिस Chennai, I would like to start off with you. You have been there for Gujarat Titans throughout the season. You have saw every win of theirs. It was like they are meant to be the winners of this trophy again. And if you're facing Chennai Super Kings, your home or anyone's home, it is definitely Chennai Super Kings. But it must be a heartbreaking for Gujarat Titans today. Yeah. I mean, it has been a roller coaster journey for Gujarat Titans. They saw their highs. Majority part of was highs, but they also saw their lows where they faced defeat at the hands of the Delhi Capitals, like the lowest ranked team beating the highest ranked team, and उसके बाद में लास्ट गेम तक भी they weren't qualified. They did not know about their position, first position पे end करेंगे या second. CSK, I mean, I can't say anything. I'm out of words that how does this team manage to produce like the Men of Steel? It is just amazing. Personally, apart from Gujarat Titans, me being a fan of Ravindra Jadeja, that was quite a thing for me because only Jadeja could have done that. Dubey was struggling with his flow. Barring those two sixes, he did not do anything, significant. But it needed a player like Ravindra Jadeja to finish off that game, and extremely strong message sent by Ravindra Jadeja to all those CSK fans who were trolling him or roasting him because he didn't let MS Dhoni bat or anything like that. He was playing for the team, and the fans thought that he's selfish, and all the captaincy stuff from the last year broke out. So that is where it really hurt Jadeja. He did some Twitter and Instagram posts as well, that karma hits hard and all sort of thing. And come down to this, you see a man who was excellent with the ball, and now he has done it with the bat. For me, his player of the match, and yeah, absolutely stunning. This is, I think, hands down, this is the most exciting IPL final ever, and I'm not even kidding. Not the 27 Mumbai Pune game, not the 2019 MICSK game. This was the most exciting game because two balls, 10 runs. There can only be one result, that is 80 or 90% in the favor of the bowling team. But Yeah. the way Jadeja did it, I feel sad for Mohit Sharma, man. Like he Yeah. literally carried the team throughout this tournament. No one expected him to do so well. Just a little stat in between here, he did not play initial few games. I think 3 or 4 games he didn't play for Gujarat, and Yeah. in the limited games that he played, he has managed to pick 27 wickets, which is equanimous to that of Rashid Khan, who has played all the games for Gujarat, and just one short of Mohammad Shami, who is the purple cap holder right now. So it is absolutely emotional story for Mohit Sharma. I saw just how Hardik Pandya was hugging him, and Yeah. Mohit was Yeah. literally in tears because he gave it his everything. But 200% of himself. Like it was yeah, not just yeah, 100%. but he just couldn't do it. All the other bowlers were getting pelted for runs, barring Yeah. Noor Ahmed and Mohit Sharma. Those, like, I can't cuss on this show, but it was freaking brilliant. I mean, this is the best final. The Worth the wait. It started on 28th of May, and today is the 30th of May. So
3 days, probably more than how long a WTC final would last. But yeah, this is something really crazy that I'm getting to see, and yeah, it was absolutely worth the wait. Worth the wait. Yeah, completely. Right, right. Sad It for was. Gujarat Titans, but yeah, just the cricket fan in me, the cricket fanatic, will want to wake up till the late night to watch such kind of games, and absolutely brilliant from CSK tonight. Yeah, yeah, And this is like also for 2 long months, IPL has been there, and we were tired as like professionals. We were working every day, but today I had no issues doing that. It's already quite late, and I'm still up watching the match, yeah. all excited. Which is right now I'm very emotional, but trust me, I have got a lot of topics to discuss, and I don't know where to start with. But let's take a look at the match summary. Then I'll come to you with the match and every moment of it. Let's take a match summary and discuss about the numbers, what CSK has gone through, what Gujarat Titans has gone through, because इस मैच ने बारिश को भी विटनेस किया और उसके बाद में हमें नंबर्स चेंज होते हुए दिखाई दिए, वहां पे टारगेट चेंज हुआ, ओवर्स चेंज हुए. तो एक बार देखते हैं मैच समरी कैसी दिखाई पड़ रही है और किस तरीके से मैच समरी में फिलहाल नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं. हम देख सकते हैं गुजरात टाइटंस ने 214 रन्स बोर्ड पर लगाए थे. बहुत ही मेहनत करके उन्होंने ये रन बनाए. साई सुदर्शन की तारीफ करनी होगी. शुभमन गिल मिस आउट कर गए थे अपने रन से विद द ब्रिलियंस ऑफ एमएस धोनी जो हमने देखा, बट साई सुदर्शन ने अपने एंड से कोई भी उन्होंने कारनामा छोड़ा नहीं. 96 रन उन्होंने बोर्ड पर लगाए जस्ट 47 बॉल्स पे. इसके अलावा रिद्धिमान साहा उन्होंने 54 रन बनाए गुजरात टाइटंस के एंड से, जो कि इनिशियली हमने ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे थे, बट जब जरूरत थी तब रिद्धिमान साहा ने करके दिखाया. मतीशा पथिराना उन्होंने 2 विकेट लिए सीएसके के लिए, और जडेजा ने बॉलिंग एंड से भी 1 विकेट अपने नाम किया. देन चेन्नई सुपर किंग्स जो कि इनिशियली टॉस जीते थे, वो जब चेस करने के लिए उतरे, उनसे पहले बारिश हो रही थी, तो डीएलएस के चलते 15 ओवरों का ये मुकाबला रखा गया और उनको टारगेट दिया गया 1 रन का, जिसमें डीपन कॉनवे ने 47, शुभम दुबे में 32 रन, और हमने जडेजा की ब्रिलियंस देखी. इसके अलावा मोहित शर्मा ने 3 विकेट लिए, देन नूर अहमद ने 2 विकेट लिए, और चेन्नई 5 विकेट से ये ट्रॉफी अपने नाम कर ले गई. और 5 विकेट से याद आया, 5 ट्रॉफी भी अब हो चुकी है सीएसके की. दे मस्ट बी रियली वेरी हैप्पी. आई डोंट नो वेदर इट इज गोइंग टू बी द लास्ट मैच और द लास्ट आईपीएल फॉर एमएस धोनी, बट दिस मस्ट बी वेरी स्पेशल बिकॉज हमने वो सीन्स भी देखे सीएसके के स्टैंड से, जब वहां पे फैंस रो रहे थे. लास्ट ओवर चल रहा था, मोहित शर्मा बैक टू बैक यॉर्कर्स मार रहे थे और रन स्कोर नहीं हो पा रहे थे. सीएसके के फैंस रो रहे थे. धोनी मैच देख नहीं रहे थे, वो नीचे देख रहे थे, वो देख ही नहीं रहे सामने क्या चल रहा था. एंड इट वाज सो इमोशनल. मुझे लग रहा था कि इट इज लूजिंग, इट्स गोइंग समवेयर एल्स. बट देन आफ्टरवर्ड्स वी सॉ व्हाट हैपेंड इन द लास्ट ओवर. आई वुड लाइक टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑफ दैट लास्ट ओवर, Vijit. How special it was for CSK and how you felt, how you are feeling it for Gujarat Titans right now. फर्स्टली लास्ट ओवर की बात करें, 13 रन्स फ्रॉम वर नीडेड फ्रॉम द लास्ट ओवर. फर्स्ट बॉल डॉट बॉल गया, उसके बाद फिर एक एक रन आया, देन इट वाज 10 of 2. वो स्टेज पे इफ यू हैव सीन सीएसके का डगआउट, दे वर वेरी लाइक डाउन, दे लुक डल. बट वो जो 6 जैसे जडेजा ने मारा, तब उनमें भी जान आ गई, सब में जान आ गई, सीएसके फैंस में जान आ गई. एंड आई जस्ट फेल्ट कि अभी 4 नीडेड ऑफ द लास्ट बॉल, शायद जडेजा कर लेगा. एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट मोहित शर्मा टू बोल ऑन द लेग. बट एक और चीज हुई थी which was very like I guess crucial at that time. फर्स्ट 4 बॉल्स बहुत अच्छे डाले थे, परफेक्ट यॉर्कर्स थे मोहित शर्मा के. देन इफ यू हैव सीन, किसी ने तो भी ड्रिंक्स लेके आया था फील्ड पे, and they were discussing, the captain and Mohit Sharma, they were discussing, and even the commentator said that his rhythm might break because of that, because he was bowling very well, he was in the zone. But as we saw, like the next one, the next Yorker didn't go well. It became a half pitch delivery, 6 गया, और उसके बाद वो वापस लाइन मिस कर गए. So sometimes these little things also like play a role. But again, Jadeja का भी temperament देखने लायक था. He was ready for it. 6 भी मारा, and then he was ready for the last ball too. So fairy tale ending for CSK. And the last over, I guess Mohit Sharma, he started off really well, and एक stage पे लगा भी कि he will just win it for GT. But वो 2 बॉल थोड़े बिगड़ गए, and it all went haywire for them. राइट. और चेन्नई के लिए ये वैसे भी इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज अंबाती रायडू का ये लास्ट आईपीएल है. उन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया था और ये उनका लास्ट मुकाबला था. एंड चिरायु अंबाती को इस वक्त सभी लोग ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं सीएसके के एंड से. सो फार जो मैं स्टेटमेंट्स अभी देख पा रही हूँ राइट नाउ, जो प्लेयर्स आफ्टर दिस मैच उन्होंने जिस तरीके की बातचीत करी है, सभी उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं. दिस मस्ट बी अ वेरी स्पेशल ट्रिब्यूट. हमने प्री शो में भी बात करी थी कि अगर ये ट्रॉफी जीत जाएगी सीएसके तो डेफिनेटली अंबाती रायडू के लिए बहुत स्पेशल होगा. एंड ही इज सो हैप्पी. एंड राइट नाउ एक बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन दीपक चहर ने
बताया है कि अम्बाती रायडू ने कहा था कि आई मेक श्योर कि ये सीएसके के हाथ जरूर लगे ट्रॉफी, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट हिज फाइनल बट दिस इज की लेगेसी उनकी है, जैसे उनका नाम है सीएसके का, दे आर नोन फॉर इट, लाइक ट्रॉफीज जीतना, फाइनल खेलना, दिस इज समथिंग। अगर सीएसके फाइनल जाकर ट्रॉफी नहीं जीतेगी तो और क्या करेगी, ये तो उनका काम है करना। सो अंबाती रायडू ने वो कुछ कर करके अपने एंड से भी दिखाया, छोटी सी इनिंग बट एक जरूरी इनिंग उनके एंड से आई, बहुत कम गेंदों में उन्होंने रन अच्छे किए, ज्यादा उन्होंने समय नहीं खपाया। वही छोटे छोटे केम्यूज की अगर हम बात करें तो अजिंक्य रहाणे का बहुत ही अच्छा केम्यू छोटा सा सीएसके के एंड से आया, अम्बाती रायडू ने जो मदद करी सो करी, रविंद्र जडेजा ने मुकाबला यहाँ पर जिताया। लेकिन धोनी की अगर हम बात करें विकेट की इटसेल्फ, चिरायू हमें से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आते ही पहली बॉल पर आउट हो जाएंगे, और जिस तरीके से वो आउट हुए हमें लग रहा था कि वो हिटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो आउट हो गए। दिस वाज क्वाइट अ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज पीपल वर रियली हैप्पी टू सी एम एस धोनी कमिंग टू द क्रीज, बिकॉज हम सब वेट करते हैं इस मोमेंट का। बट आज वो इस तरीके से मैच जिस तरीके से फिनिश करने के लिए वो नून, और उनके लिए एकदम स्टेज सेट था, बट हमने इस थ्रू आउट सीजन भी देखा एमएस धोनी कर नहीं पाए। सो व्हाट प्रॉब्लम डू यू सी राइट नाउ, लाइक इट इज द नी, आई नो, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड द नी प्रॉब्लम व्हिच ही हैज ऑलरेडी told in many matches before, but what else do you see, जिस तरीके से उन्होंने अपना विकेट गवाया, what was wrong there for from MS Dhoni's end? I don't think it was any sort of problem for MS Dhoni. He just saw the ball and he hit it in the. It was in his range, so he tried to hit it. But just one fielder there on the offside, inside the 30-yard circle, and he managed to find that fielder. So I don't think there was any such a problem. But in the same over, I would really like to speak highly of Ambati Raidu here, as you rightly spoke. That over, the first three balls hit for a boundary. That was the turning point of the match for me. That really pulled the game in CSK's favor absolutely, because they needed like 15 balls, 22 runs at that point, and it was never really easy for Gujarat to come back into the game. I'm really happy that they did it, but it was a sheer brilliance of Ambati Raidu. It is just a knock of 19 runs of 8 balls, but you don't understand that. In the context of the game, this might be a match-winning innings. You really can't, say that it was a cameo. I feel it was a proper innings from him, because he delivered what was needed. Nothing much extra, nothing. He just did his job, and in the last match, playing so well and winning the cup for your country, like for your franchise, it is really it must be emotional for him, for all the CSK fans as well, and. I'm really sure that Ambati Raidu will cherish this moment for the rest of his life, and this might be like the best trophy CSK has ever won. Because I'm actually out of words how CSK pulled this game off. Because 171 runs in 15 overs, never so easy, but uh, they knew that if this is a shortened game, they knew that all they have to do after the rain is fire from the word go. We couldn't see much bigger knocks from any one of CSK's batter, but it was a whole combined team effort. uh, Yeah. we say that Shivam Dubey wasn't that good with the bat, but he also hit two sixes, which were important in the context of the game. So yeah, a complete team effort from CSK, and yeah, just pretty happy for Ambati Raidu and MS Dhoni as well. If it is his last game, I'm really happy that MS Dhoni could do it, because in his last international game, he couldn't win it for India, and we all were emotional at that point of time. But everyone is happy here, and I really hope that he continues to play one more season at least for the fans of CSK, and for it is just an emotion that CSK equals Mahi. It is nothing short of a statement, and I really hope that I'm actually out of words. They're like how good this game turned out to be for CSK, but yeah, congrats to CSK. Nothing else. That's what I can speak of right now. Vijit, we can talk about Gujarat Titans because the way they have played as well. Like initially they were dominating CSK जिस तरीके से वो बैट कर रहे थे. It feels like कि जैसे इन MI के केस में भी उन्होंने किया था 230 अराउंड उन्होंने कुछ टारगेट खड़ा कर दिया था MI के अगेंस्ट, और फिर MI उसको चेस डाउन नहीं कर पाई थी. लेकिन यहाँ पर खैर बारिश की वजह से खलल मैच में पड़ी, और उसके बाद में DLS के चलते वो चॉप डाउन हो गया, थोड़ा सा ओवर्स रिड्यूस हो गए, टारगेट थोड़ा कम हो गया, बट स्टिल इट वाज डिफिकल्ट. 15 ओवर्स में 171, इट वाज स्टिल डिफिकल्ट.
बट समहाउ सीएसके हैज डन इट. बट गुजरात टाइटंस की तारीफ भी कर रही होगी जिस तरीके से उनके बैटिंग लाइनअप ने काम करके दिखाया. भले चाहे गिल का आप नाम ले लीजिए, चाहे आप साहा का नाम ले लीजिए, चाहे आप साई सुदर्शन का नाम ले लीजिए, बैक टू बैक इनिंग्स उन्होंने अपने विकेट जल्दी जल्दी नहीं गवाए. इवन सीएसके विकेट नहीं ले पा रही थी. उनके बोलर्स जिन पे वो रिलाई करते हैं, पथी राणा, तीक्षाना, वो ज्यादा कमाल नहीं कर पा रहे थे. एक दो विकेट के अलावा और कुछ हो ही नहीं पा रहा था सीएसके के लिए, जो कि इनिशियली बाद में जाकर के एक बड़ा नुकसान बना. बट तारीफ करनी होगी गुजरात टाइटंस की, और जिस तरीके से उन्होंने अपना बॉलिंग भी हैंडल किया उसमें भी तारीफ बनती है. आई वुड लाइक टू नो कि आपको आज सबसे ज्यादा इंप्रेसिव क्या लगा गुजरात टाइटंस के एंड से? क्या उनकी इंटेंट सबसे इंप्रेसिव थी, या किसी एक पर्टिकुलर स्किल सेट की अगर आप बात करना चाहें तो वो आप अपने एंड से बताइए कि आपके हिसाब से मोस्ट इंप्रेसिंग पार्ट क्या था गुजरात टाइटंस के लिए? द मोस्ट इम्प्रेसिव और द मोस्ट डिफरेंट पार्ट जो देखने मिला आज वो था कि दे वर नॉट इवन आफ्टर गिल्स विकेट दे वर नॉट लाइक कि अभी क्या करेंगे, बिकॉज इतने पिछले कुछ मैचेस में ये हुआ है कि गिल वाज द पर्सन हु वाज द एनफोर्सर, हु वाज प्लेइंग द एंकर रोल एंड ही वाज प्लेइंग ऑलमोस्ट टिल द एंड. तो गिल का विकेट इस बार जल्दी गया एंड आफ्टर दैट इट वाजंट लाइक कि अभी क्या होगा, अभी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या कैसे अप्रोच करना है. They were again going smoothly after that as well. थोड़ा slow period आया था after that wicket, but after that थोड़ा सहाने and सुदर्शन they got into the groove. और उसके बाद अब बढ़िया सा एक पार्टनरशिप हुआ उनके बीच में. देन आफ्टरवर्ड्स पांड्या आए, उन्होंने भी एक अच्छा कैमियो खेला. सो गुजरात वर नॉट अफेक्टेड बाय गिल्स विकेट व्हिच आई फेल्ट एट दैट टाइम व्हेन द विकेट फेल कि हो सकता है अभी पता नहीं शायद 2-3 विकेट जल्दी गिर जाए या फिर रन रेट काफी स्लो हो जाए. बट दैट डिडंट हैपन एंड they were cruising afterwards as well. थोड़ा स्लो पीरियड आया बट every batter after that they contributed and they had some good partnerships. And as you said, CSK were unable to take wickets, which was a bit strange at that time, because as I said, I felt like कि थोड़ा भी momentum CSK की तरफ जाएगा after Gill's wicket, but that didn't happen. एंड एट वन स्टेज इट फेल्ट लाइक कि धोनी का डिसीजन शायद गलत हो गया है टॉस जीत के बॉलिंग करना, बिकॉज ओवर 200 रन्स इन अ फाइनल बहुत डिफिकल्ट है. एंड like chasing 200 in a final would be in any tournaments final, it's too difficult. So वो थोड़ा एक फैक्टर लग रहा था at the halfway mark. But बारिश आई, फिर थोड़ा गेम का पूरा इक्वेशन चेंज हो गया and afterwards it became a bit easier for CSK because they had 5 overs less to play. तो विकेट्स का भी इतना वो फिक्र नहीं था and they could have like they could go attacking in the attacking mode right from the start. तो वैसा हुआ. एंड सीएसके का फिर तो सीएसके का जस्ट एक सम अप कर दूं तो सीएसके के सभी प्लेयर्स एक्सेप्ट धोनी अनफॉर्चुनेटली, सभी प्लेयर्स आए, दे प्लेड अ कैमियो, दे स्कोर्ड बाउंड्रीज एंड दे वेंट बैक. बस सबने अपना अपना थोड़ा छोटा छोटा रोल किया और आखिरी में जडेजा ने पूरा काम तमाम कर दिया. सो GT, they have been impressive throughout the tournament. They have been impressive. Purple cap holder Mohammad Shami. Then they had Mohit Sharma as well, Rashid Khan. अब ये top three I guess top three ये GT के ही है, चिरायू I guess. So मतलब कमाल की बात है. The bowling is impressive and गिल ने तो पूरा बैटिंग का तो पूरा जिम्मा उन्होंने उठा लिया था. So it's a great team and I think I felt last year I felt that maybe that what was kind of a fluke that GT won the tournament last year. But इस बार का जिस तरह से वो शुरुआत करे, I was like, you know, this team has the capability, एक stability है उनमें और एक perfect मतलब सबका role perfectly एक एक जन निभाता है. So it's a good team and it will be like it will compete really well in the years to come. राइट. इट वाज लाइक अ प्रॉपर क्रिकेट मैच जहां पर सबका हमें योगदान देखने को मिला है, चाहे वो गुजरात के एंड से हो, चाहे वो चेन्नई के एंड से हो. दोनों ही टीम्स ने इस तरीके का कमाल करके दिखाया है. बट और जैसे कि बारिश हम का लोग भी अभी गुजरात योगदान के था. बारे में बारिश का भी योगदान. एक प्रॉपर क्रिकेट मैच जहां पर अपना दिया और अपना योगदान दिया. सुजीत, सिंस हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑलरेडी गुजरात टाइटंस की, एंड दे मस्ट बी फीलिंग रियली सैड अबाउट इट. सो आई एम जस्ट आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ वी कैन रियली गिव अ पेप टॉक टू गुजरात टाइटंस नाउ, बिकॉज दे हैव डन एवरीथिंग. लाइक कुछ गलत नहीं किया उन्होंने थ्रू आउट टूर्नामेंट. टेबल टॉप उन्होंने अपना सीजन एंड किया. ये मैच भी पूरी मेहनत से खेला, रन बनाए, विकेट लिए, यॉर्कर्स डाले, व्हाटएवर, लाइक जो भी उनके हाथ में था सब कुछ किया. ऐसी सिचुएशन में इफ यू गेट अ चांस टू गिव अ पेप टॉक टू गुजरात टाइटंस टीम, what will you tell them? What will you like really, how will you console them, because they could not win the trophy in the end? आई गेस उनको इतना डिसअपॉइंटेड आई थिंक वो होगे भी नहीं शायद और होना भी नहीं चाहिए. और
आई गेस मतलब वो पेप टॉक तो ठीक है, पेप टॉक दे सकते हैं, बट अगेन आई आई फील दे ट्राइड द बेस्ट और बहुत अच्छा खेले, एंड जस्ट 2 बॉल 3 बॉल का आखिरी में डिफरेंस वही रह गया। सीएसके ने हम्म बाजी मार ली आखिरी 2 बॉल पे, अगर एक यॉर्कर और सही चला जाता मोहित शर्मा का तो मैच हम्म जीटी के फेवर में चला जाता था। सो इट वाज हम्म बहुत थिन मार्जिन थी आखिर में। सो आई गेस दे वोंट बी डिसअपॉइंटेड, और उनके पास हार्दिक पांड्या आई गेस लाइक अगर कोई बंदा डिसअपॉइंटेड होता भी है टीम का, सो दे हैव हार्दिक पांड्या, दे हैव आशीष नेहरा टू चीयर दैट गाय अप। सो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एंड दे आर अ ग्रेट टीम, लाइक दे आर एक्चुअली अ ग्रेट टीम। एंड दो दो कॉन्सिक्यूटिव सीजन्स में हम्म फाइनल में आना, एक फाइनल जीतना और दूसरा जस्ट मिस कर जाना बहुत ही छोटे मार्जिन से। सो हम्म आई गेस लाइक दे डोंट हैव टू बी दैट डिसअपॉइंटेड ओवरऑल। राइट। चिरायु, आई वुड लाइक टू, अभी सक्सेस की एक नई डेफिनेशन मिली है। अभी हार्दिक पांड्या ने ही बोला था कि सक्सेस के दो रास्ते होते हैं, एमआईसीएस के, बट मुझे लगता है कि जीटी भी उसका पार्ट है, जिस तरीके से उन्होंने थ्रू आउट 2 सीजन करके दिखाया है। सो हमें 3 सक्सेस के रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं। देयर इज वन जीटी का तरीका, देयर इज वन सीएसके का तरीका, देयर इज वन एमआई का तरीका। नाउ यू लेट मी know ki what according to your youngster would be the best way to groom a youngster, whether you will send a young cricketer to GT's dressing room, to CSK's dressing room, or to MI's dressing room. Which team do you think has the best dressing room for a young cricketer to go and grow? To be really honest, I will be a bit biased towards Mumbai Indians here because we know that they have groomed so many youngsters and they have broken into the Indian team as well. There are countless names that I can take, even Rohit Sharma for that matter. He was really young when he joined Mumbai Indians. Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, Krunal Pandya, and the list doesn't end. This year we saw Akash Madwal and the likes of Tilak Verma and Nehal Vadera. So many youngsters they have groomed, and I don't see any of those players being groomed under CSK apart from just one player, that is Deepak Chahar. I feel only Deepak Chahar is one that has really shined being under CSK as a youngster. Otherwise, CSK is known to take experienced players and make the best team, make best team combination out of them. And speaking of Gujarat, they are fairly new franchise, so I think they need a bit more time. But अभी तक उनका जैसा सीजन जा रहा है, मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि गुजरात is one of the best teams to be in because the way Hardik Pandya controls his player, he is himself a youngster and he knows how crunch situations can be. Like the moment that I already spoke about, the one with Mohit Sharma after the match ended, how difficult it must be for a player to to not live up to the captain's expectations after bowling like the 16 best balls of his life maybe, and just not being able to bowl two good balls, so that is where it boils down. And the way Hardik Pandya hugged him, it was really heartwarming, and I felt really sad for Mohit Sharma. It has been an inspirational journey for him so far. Like you just imagine being a net bowler in IPL, playing your last game in 2020, and that too not the whole tournament. You are getting to play just filler games, and uske baad mein you come in and you end up as this second leading wicket taker for your team. That this is something absolutely brilliant. And speaking of Gujarat Titans at the moment, if you speak about their team combination, I don't think they have done anything wrong at the moment because क्या क्या कमी रह गई है कि हम बात कर सके उसके बारे में. ऑरेंज कैप, यस दे हैव इट. पर्पल कैप, यस दे हैव इट. लाइक their four bowlers have more than 20 plus wickets, so there is no problem absolutely at all with this team, and the team combination is really well. एंड अगर हम देख भी रहे हैं कि सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर गुजरात टाइटंस के लिए हार्दिक पांड्या है, या आज रिद्धिमान शाह हो गए होंगे जिन्होंने कुछ थोड़े ही रन बनाए बस. तो हम देख सकते हैं कि शुभमन गिल ने किस तरह से इस टीम को कैरी किया है. वो लिटरली 17 या 18 ओवर्स तक, कभी कभी उन्होंने 20 ओवर तक भी पूरी बैटिंग की है. सो प्लेइंग द फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच एंड प्लेइंग द लास्ट बॉल ऑफ द मैच is really crucial. 890 runs in the season, overtaking Josh Butler just behind Virat Kohli, just shows that the sublime form, the sublime touch he is in. And I'm really happy for the way GTF played. Yes, a bit disappointed that they couldn't lift the title this time around, but uh,
I don't think it is a learning experience for them, because they have done everything right, right from the word go, from point A to point Z. They did everything right, just missing out on those two balls, because when your team needs to defend 22 runs of 15 balls, it is never easy. But the way Shami and Mohit bowled, it is something to learn from. The other thing, other teams should learn from them, rather than them getting a learning experience from others. So yeah, this is an absolutely sensational journey for Gujarat Titans this season, and I hope that they come back even stronger next season, and yeah, lift the title. That, yeah, राइट, that और is मुझे all. लगता है कि गुजरात टाइटन्स के लिए अभी मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली जितना डिफिकल्ट था अपना कॉम्बिनेशन बनाना, अब उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है कि आप अगले सीजन किसे रिटेन करेंगे, किस प्लेयर को रिटेन करेंगे, किसका कॉम्बिनेशन के लिए आप रोकेंगे, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अनदर डिफिकल्ट थिंग. इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता कोई भी टीम बना सकती थी. आई कैन हार्डली लाइक आई कैन सी गुजरात टाइटंस एज लेट 90s की जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, या अर्ली 2000s की आप बोल सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी. एवरीथिंग वाज परफेक्ट. लाइक आपके पास सबसे बेस्ट बॉलर्स हैं, बेस्ट बैटर्स हैं, बेस्ट फील्डर्स हैं, क्या नहीं है आपके पास. इट फील्स लाइक दिस टू सी गुजरात टाइटंस, एंड दैट इज क्वाइट अ नेम. अगर हम गुजरात टाइटंस को यहाँ पर एक टैग देना चाहें, दिस इज समथिंग वेयर वी कैन रिलेट टू फ्रॉम गुजरात टाइटंस. बट ये उनके नेक्स्ट सीजन डिफिकल्ट होने वाला है, किसे रिटेन करना है, कैसे करना है. अब देखते हैं सोशल ट्रैकर की तरफ एक बार बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या ट्वीट्स हैं, क्या दुनिया में बातें चल रही हैं, क्योंकि हमने तो डिस्कशन कर लिया, बट ऑब्वियसली सोशल ट्रैकर की दुनिया में क्या है बहस का हिस्सा. एक बार नजर डालते हैं ट्वीट्स पर. ये है पहला ट्वीट. इट इज बैक टू बैक 6 बाय शिवम दुबे. मूवमेंट शिफ्ट्स टू सीएसके. दुबे मॉन्स्टर इन अहमदाबाद, 38 रन सीडेड इन 18 बॉल्स. और जैसा कि हमने कहा था कि हर एक इनिंग में हर एक बैटर का अपना अपना कैमियो देखने को मिला है यहाँ सीएसके के एंड से, तो वैसे ये एक और एक एंड था जो कि शिवम दुबे ने अपने एंड से कंफर्म किया. नाउ पिक वन. ईसीबी कवरिंग देयर ग्राउंड विद हाउ covers a large portion of minimal manpower required to drag it, when BCCI using sponges to soak water. And this is something like obviously हम लोग हमेशा से बात करते आ रहे हैं with the kind of techniques BCCI uses. Even सबसे बुरा तो तब लगता है जब मैच कभी गुवाहाटी में होता था. मुझे याद है प्रेस यूज करी गई थी टू ड्राई द ग्राउंड, और वो काफी अजीब था. आज तो फिर भी हेयर ड्रायर्स थे, बट हमने गुवाहाटी में प्रेस को भी यूज होते हुए देखा है वहां पे. बट इज इज समथिंग लाइक बीसीसीआई इज दैट लाइक वो इस तरीके के बोर्ड्स का हिस्सा है ऑलरेडी, जो कि रिचेस्ट है अपने आप में in front of any other cricket board. And then हम लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे, जबकि इतना अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है इंडिया का भी इटसेल्फ. बट ठीक है, ये अलग बहस का हिस्सा है, इसके लिए हम अलग से ट्विटर स्पेस लेकर के आएंगे. अब देखते हैं अगला ट्वीट हमारा इस सेगमेंट का. और ये finally rainstormed and God has listened to this cute girl prayer to hold the barish and last the match and let the match happen. CSK versus GT. और ये क्यूट कौन है हम सब जानते हैं, दिस इज जीवा धोनी. रही है कि ये मैच हो सके, और डेफिनेटली वो सिर्फ मैच हुआ ही नहीं बल्कि सीएसके के फेवर में भी गया. अगला ट्वीट रणवीर सिंह का, जस्ट गुड थिंग. और ये जिस तरीके का आज रन आउट करके दिखाया है, यहाँ पर स्टंपिंग करके दिखाई है, सॉरी, एमएस धोनी ने, इट वाज brilliant from his end, because it was 0.1 second, it was 0.01 second, which was very very fast from MS Dhoni's end. और शुभमन गिल को आउट करने के लिए शायद इसी ब्रिलियंस की जरूरत थी जो एमएस ने अपने एंड से आज करके दिखाई है. Now the only person who can drain Narendra Modi Stadium is officer pumped out water for 3 days after his phone went into the wire. I do remember this news. I hope आप लोगों ने भी ये न्यूज सुनी होगी. Officer, I think it's time to switch duties. Go to IPL, go to BCCI. We need you because that's the only way we can get it. और हमें हेयर ड्रायर से प्रेस को भी इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा. And we must know how he has done it. 3 days में reservoir, wow. And then afterwards हमने देखा, if this officer was there in yesterday, like 28th May को जब फाइनल होना था, I'm sure ये मैच कल ही हो जाता फिर, because he was there. He could have done it for BCCI and for CSK and GT. But जो होता है अच्छे के लिए होता है. आई एम श्योर बीसीसीआई ने ये ट्वीट देखा हो अबाउट इट, सो हम इस नए ऑफिसर को देख सके आईपीएल में. बट थैंक यू सो मच रायू एंड विजीत फॉर जॉइनिंग मी for this discussion. This is end from our side for the IPL only, but हम लोग WTC फाइनल में भी लौटेंगे, जहां पर हम लोग सुबह शाम आपसे बात करेंगे क्रिकेट के बारे में, और होगा और भी एक्साइटिंग कंटेंट. जस्ट बी देयर विद क्विक ट्रैकर्स इन द एयर शो.